क्या हुआ भाई? ओके चलो लेट्स स्टार्ट। हेलो हेलो एवरीवन, लाइक कौन कौन हो गए हो? आ जाओ जल्दी से, कमेंट करो, पता चल जाएगा कौन कौन हो। नात्सु, मॉड मेरा भाई, मॉड मॉड भाई आ जाओ, मॉड भाई आ जाओ, जल्दी जल्दी से आ जाओ मॉड भाई, मॉड भाई, मॉड आ जाओ भाई। मॉड, गलती कर दिया, ये गया उसका मौत। और इधर हमेशा लॉस हो जाता है, ये एक तो लेट होगा ही होगा। चलो चलो, 3 लोग जो हो जल्दी जल्दी से कमेंट करो कि कौन हो। यहाँ पे बात करेंगे, जो बात करना है यहीं पे बताओ। देव, देव हो क्या? केवाईसी देव, जो भी हो यार बता दो जल्दी जल्दी से। इतना शांत क्यों हो? अरे चला भी गया कोई। नात्सु भाई 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 भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम भाई। भाई वो वाला शेयर कर दिया है ना? मैं दिया था। ये जो भी था ना, जो कुछ बिना बोले निकल गया पहले, मैं गेस नहीं करना चाहता हूँ उसका नाम, बट इफ दैट इज द सेम पर्सन देन आई वुड अंडरस्टैंड। ओह ये वाला है। अरे है कुछ वियर्ड थोड़ा है, लेकिन ठीक है, अभी मैं क्या ही बोल सकता हूँ। है गलत, गलत एजेंट पकड़ लिया भाई, ये वाला एजेंट नहीं लेना चाहिए था। टीम चेंज करो, टीम चेंज करके खेलते हैं। अगला पुल मेरा होगा, किसका? बताओ बताओ किसको पुल करूँगा नेक्स्ट? मेरा नेक्स्ट पुल कौन होगा बताओ, तुम लोग बताओ। नात्सु लिंक शेयर कर दे भाई मेरे।
लिंक शेयर कर दे, लिंक शेयर करके मेंशन कर दे, बाकी देव वेव को मेंशन कर दे, वो लोग को आने के लिए बोल दे। 6 से 8 आज करूँगा, थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि आज थोड़ा मतलब दिक्कत में हूँ थोड़ा, और क्या बताएं। अलहैतम को बिल्ड करने के लिए हेल्प चाहिए, बताओ तो कोई अच्छा वाला कोई आएगा तो इजी है। वाह, सब छोड़ के निकल गए, ये भी सही है भाई। क्यों आवाज़ नहीं आ रही है क्या, बताओ तो, आवाज़ आ रही है ना ठीक ठाक से? हाँ गाइस, गाइस कैसा आवाज़ आ रहा है गाइस? हाँ मेरा कैमरा ऑन नहीं है ना, कैमरा ऑन करूँ? करता हूँ फिर। बैकग्राउंड मेरा बड़ा सेक्सी लग रहा है दिख के, बड़ा सेक्सी बैकग्राउंड है मेरा, ऐसी। चाइल्ड ट्रीट, चाइल्ड ट्रीट, व्हाट द फक, WTF, WTF। There have been many poorly written applications lately. I guess I'll just have to reject them all. You just have to reject all of them, bro. Shit. Economy of festival. कुछ हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पैसा वैसा डोनेट किया है क्या? कुछ होगा? कुछ हुआ? साला पैसा डोनेट करो, देखो बहुत कुछ होगा। पैसा, बस पैसा फेंको बस। बस पैसे की तो कमी है, बस वही फेंक दो एकदम मस्त। क्या मेरा नोटिफिकेशंस क्यों आ रहे हैं ऐसे? अरे इस बेवड़ी लड़की सब कुछ खो देती है हर बार। क्या खुई है? क्या हुआ बेटी? क्या हो गया? वोंट बी एबल टू अनदर कॉपी। कर दिया? क्या कर दिया? पैसे दे। किस बात का? क्या कर दिया ये बता तू पहले, क्या कर, क्या क्या है तो पहले ये बता। बंदे तो मेरे 3 से 2 हो गए, 1 हो गए। भक असुरा। ये कौन है? वांडा। अरे वांडा वांडा नहीं, अभी वांडा में अंडा करेगा। बाक असुरा। अरे असुरा भाई क्या हाल है? असुरा बहुत दिन बाद। 6000 निकाल नात्सु। अरे यार क्या बात कर रहा है, नात्सु के लिए 6000? रेट ठीक लगा रहे। लिंक शेयर, ओ अच्छा, ऐसी कौन सी लिंक है भाई? हमको भी बताओ। अरे भेड़ का ये नेविगेट करना था। कर दिया, आप पैसे भेज। लिंक शेयर कर दिया। बंदे तो 3 ही है मेरे, बंदे तो 7 तक आते थे पहले, मेरे को थोड़ा ज्यादा दे बंदे दे। 6000, 6000 चाहिए तेरे को? 6000 मोहरा दूंगा। एक सेकंड, पापा कॉल किए। कौन है तू भाई?
भाई असुरा को बोल रहा है कौन है तू? हाँ, नात्सु बड़ा हो गया भाई, बड़ा हो गया नात्सु। नात्सु बड़ा हो गया है। भाव नहीं देता आजकल नात्सु किसी को, बहुत बड़ा हो गया वो। समझा दे असुरा कौन है तू, उसको समझा दे। गद्दारी कर बे, गद्दारी कर बे। अरे नहीं नहीं मत बोल उसका, हट। नेक्स्ट नेक्स्ट हाफ उस पे लग जाएगा वो। गद्दारी कर बे, गद्दारी कर भाई। बताओ 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 तुम लोगों का, मैं तुम लोगों का देखना चाहता हूँ क्या चल रहा है। पहले ये बताओ तुम लोगों का चल क्या रहा है चैट में, मेरे को वो देखना है। 4 बंदे देख रहे हैं, मेरे को देखना है कि चल क्या रहा है। बकचोदी कब स्टार्ट होने वाली है? मैं बैठा हूँ बस बकचोदी सुनने के लिए भाई, और कुछ नहीं। गेम गया थोड़ा साइड में, तुम पहले बताओ बकचोदी क्या करना है। देव नहीं आया रे, नात्सु बुलाइए उसको। आती 6000 का बात चलने लग गया। क्या बात है, क्या बात है। गदारी, गदारी कर बे। हाँ, Add astro. Thank you for. Add astro. जो लोग ये सब नहीं करते हो उनको लिए है, जरूर करियो। नात्सु अच्छा, मैं किस में खर्चा करूँ? वहाँ दूसरी आईडी तूने उसको, नात्सु तूने उसको क्या म्यूट किया है असुरा को? सच बता। उसको टाइम आउट तो नहीं किया ना? चाहिए अगर मैं भेज भी देता हूँ, मेरे पास कोई ये फाइट करने के लिए नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता। फुरीना को मारने के लिए यह पॉज जरूरी है, इसको मारना जरूरी है। चलो इसको एक बार मार देता हूँ। नहीं, अच्छा ठीक है चलो। असुरा छक्के देना, अरे भाई क्या यार, छक्के देना तो क्या बोल रहा? उसका 3-4 आईडी है। वाह 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 असुरा वाह, 3-4 आईडी है। क्या बात, क्या बात है। सबसे खोल के रख दे, सब में खोल के रख दे एकदम मस्त से। चेंज करके आता रहता है वो भाई, इतना चेंज तो। हाँ कुछ और भी क्या चेंज करता है इतना? ऑफ इंटरेस्टिंग, वे टू मच इंटरेस्टिंग। बट लेट्स गेट बैक। ये फैमिली शो तो है नहीं, लेकिन ठीक है। इसको नहीं लेंगे, इसको इसके बदले ये लेंगे। ओ डेंड्रो एक एप्लीकेशन चाहिए ना, वरना तो फट जाएगा यहाँ। डेंड्रो एप्लीकेशन में किसको लिया जाए, किसको लिया जाए? वो पहला वाला टीम ही लिया जाएगा, इसको छोड़ के ये डेंड्रो को। हाँ तो ठीक है। लड़की भी तू का, तू देगा, तू देगा लड़की भी। हो, लड़की भी देगा नात्सु का, और यही तो बच गया है नात्सु के लिए, और क्या। नात्सु का और क्या हो गया बोल तो। Busted. Here comes the catch. Time for a light show. Illusion shattered. A bitter pill to swallow.
जा और उड़। Fire hazard. क्या यार नात्सु क्या सब बोल रहा है वो? ओके Gotcha. Shine down. The doctor will see you. Illusion shattered. क्या करूँ, एक सही काम नहीं चलता है, चेंज करता आता है वो लड़की। एक काम से ढंग से सही नहीं चलता क्या? एक तो सही चलना चाहिए ना। एक भी नहीं चलता तुम्हारा। वेट, क्या दिख रहा है? मैं थोड़ा यहाँ पे देख लूँ, बहुत ही वियर्ड लग रहा है। रुको, मैं ये पहले बंद करता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है भाई। 40, ये 46 चाहिए होता है ना, ये वाला 36 है। फॉर 80 लेवल नहीं था, इज ओके आई गेस, ठीक ठाक। और क्या बाकी रह गया? और कोई बोलो किसको मारे? सारे ये तो ख़त्म हो गए ना। ओ माय गॉड, ये तो कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। इसको चलता है पहले, इसको किधर गया? ट्रांसडोमेन, ये वाला करता हूँ पहले। इसमें स्टार्ट होगा, स्टार्ट स्टार्ट। क्या लिया जाएगा इसके लिए? इसको एक है उसके लिए, हाँ ठीक है। फिर उसके लिए वो, हाँ ठीक है। और कोई, और कोई नहीं, और कोई नहीं लगेगा। ये काफ़ी है, मार देगा ये। बायगन, बायगन है बायगन। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी है? आई, कौन सी सब्जेक्ट फेवरेट है? बायगन। सब्जेक्ट और सब्जी में फ़र्क नहीं समझा। नात्सु के जैसा, नात्सु का रो रहा है। Shine down. Solidify! Busted. Game's up. Fun's over. Wretched vermin! Squall fury! Quietly now. pretty good. Stabilize! Here comes the catch. There is no escape. Solidify! Busted. Gotcha. Game's up. Fun's over. Inazuma shines eternal. Shine down. Gather! Behold! Busted.
क्राउड कंट्रोल के लिए ये सही है। Busted. Game's up. Fun's over. Cry loud. The wind rises upon the gale. हे इंग्लिश। सवास ग्रीन कलर हो गया एकदम मस्त मस्त। Gotcha. Illusion shattered. Stabilize. Busted. Here comes the catch. Inazuma shines eternal. Gather. Things are about to get dicey. ठीक ठाक नहीं है ये भी अच्छा नहीं आता यार। काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा हूँ नहीं आ रहा। उस दिन तो 8 शायद मैंने कंडेंस रेजिन यूज़ किए फिर भी नहीं आया। और दूसरा किसको मारूँ? इसका मेरा कितना है टोटल? दो नहीं इसको नहीं होगा। फिर इसको देखता हूँ। 7 2 ये तो नहीं आएगा। इसका 6 12 काफ़ी शायद काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है चलेगा। इसको नहीं चाहिए। फिर इसका 22 16 21 भाट रहे। सिग्नोरा मेरा ज़्यादा नहीं होगा। ये फ्लेम 0 ये 6 ये 7 इसको एक बार मारता हूँ। अच्छा क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए वो देख लेता हूँ। सिग्नोरा में क्या आता है पहले? ये उसके बाद हीट। हीट आता है ना? पहले क्रायो उसके बाद हीट। मार पाऊंगा इसको अकेला? अकेला नहीं होता मेरा। Shala. For me.
ओके कोऑप चैलेंज टुगेदर। इससे मैं क्या चैलेंज करूँ? इसको मैं दूंगा फुइना। यस। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, इसको मैं पुल करूँ? 50-50 पे हूँ। मन कर रहा है बड़ा इसका। अच्छा है डैमेज, लेकिन उसका सिग्नेचर वेपन से चलो देखते हैं। मैं हील भी कर सकता हूँ, मार भी सकता हूँ, देखते हैं क्या होता है। भाई क्या बातें हो रही है, क्या बातें हो रही है, थोड़ा बताओ, मैं भी थोड़ा You're सुनो। trembling. Is it the cold or just cowardice? कुतिया बहुत ठंडी लग रही है, कसम से बहुत पहला खाएगा तू। अटैक, मैं थोड़ा हीट से खा लूँ। Detestable. चलो ठीक है, मैं अपना हील तो कम होता जाएगा, हील तो कम होता ही जाएगा मेरा, सबका भी कम होगा। Into the अभी frozen आओ void. आओ, फिर सबको हील भी हम ही करेंगे। Lightning. चलो एवरीवन। बकचोदी क्या कर रहा है उसकी? इसका स्टोरी क्या सब हो रहा है? आ गया रे, आ गया रे, आ गया रे, आ गया रे, आ गया रे। अरे किधर से ये मार दिया भाई? ये This one's got your. अबे गधा मार दिया, और ये तोड़ रहा है उसको रे। The show begins. अरे इसको पकड़ो, किधर गया वो? क्रिस्टल सप्लाई, वो किधर गया? वो सब करने से कुछ नहीं होगा रे भाई, बेकार में कर रहा है। Benevolence has no place for transgressors. ओ भाई साहब, मेरे को दिख क्यों नहीं रहे? वो फ्लावर उस साइड हो गया, फ्लावर उस साइड हो गया। देख मेरे वजह से सब जिंदा है भाई साहब, टोटल। बाकी लोग आ रहे हैं ना, पूरा चुपचाप है, पूरा चुपचाप शांत। अब दिखाया ये पाट रहे। हाँ खा, मार 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 मार। डैमेज तो हमारा कांस्टेंट देगा, ऐसा डैमेज देगा मेरा मजा आ जाएगी। इसका पार्ट खोल दिया इससे, ये सबसे अच्छा है, पता है ना। अबे तू उसको क्या मार रहा है? अरे बेवड़ा चीज विवेक, यहाँ आके मार रहे, इसको मार। मेरा बंदे आके कहाँ पे किसको मार रहा है? वो जाके वो सब तोड़ रहे हैं। हाँ भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। पकड़ो साला, भागने ना पाए, किधर जाएगा? हाँ हील 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 हील, अभी हील सबसे जरूरी है। यहीं पे खड़ी हो जाओ, खड़ा हो जाओगा, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ उखाड़ नहीं पाएगा वो मेरा। This one's got. ये लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। कृपया करके चैट करे, चैट करने के लिए पैसे नहीं लगते, ऐसा कुछ लिख रहेगा क्या? 8 है 7 है, चलो ठीक है। ये कुछ मिला? क्रायो डैमेज, चलो कुछ तो मिला। ये चैलेंज कंप्लीट वाला मस्त था नहीं? चैलेंज कंप्लीट और फुरीना का बर्स्ट सही लग रहा था रे। टेम्पररी अनेबल टू, क्या कर रहे हैं? सब निकले? कोई निकला नहीं। फाहिम शिला कुछ बोल रहा है क्या? कुछ बोलना है इसको? नहीं कुछ नहीं बोलेगा। मैं जा रहा हूँ, फिर इसको निकालता हूँ, पहले कर रहा हूँ मैं। हाँ निकल गया, चलो खत्म। और लास्ट, और एक ठो, और लास्ट एक ही बचा है। कौन सा ट्रांस डोमेन करूँ, जल्दी से बताओ, चैट सेक्शन में जल्दी से बताओ कौन सा ट्रांस करूँ। जो भी बोलोगे वो करेंगे, जो भी। लेकिन ये वाला तो नहीं होगा, बेकार में लॉस मत बोलियो। नया वाला तो भाई होता है स्ट्राइकर के मारने के लिए। क्या यार तू कुछ भी
हैशटैग टू द कुछ भी लिखे जा रहा है गाछ तो है। अरे मैं लिटरली ट्रांसपोर्टर को लेके किसी और से जा रहा हूँ। हट जा अपने मम्मी के पास जा। अरे 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 गिर गया गिर गया। ये यहाँ पे चढ़ने का, यहाँ पे चढ़ के एक 10 पुल करता हूँ ठीक है। एक 10 पुल यहाँ पे चढ़ के, यहाँ से चढ़ के जाऊँगा ऊपर, टॉप में जाऊँगा तभी करूँगा ठीक है। नहीं ये वाला नहीं, इसका घर पे, हाँ इसके घर पे, ये वाला जगह पे, हाँ ये वाला, इसके घर पे जाके करूँगा। टोटल टॉप पे जाऊँगा और एक 10 पुल ठीक है। टू पीसी असुरा ले रहे हो, वैसे ले रहे हो। उसमें मैं स्कारा का एबिलिटी यूज़ नहीं करने वाला ठीक है। चलो देखता हूँ चल सकता हूँ कि नहीं ऊपर तक, वहाँ पर। हाँ ठीक है एकदम, उसका जो क्राउन है उस क्राउन के पास दो। अबे तुम शर्म करो रे, कुछ भी है कुछ भी। देखो एक छोटा सा चैलेंज लिया हूँ, ऊपर जाकर 10 पुल करूँगा। ऐसे ना करो ठीक है ना, ऐसे ना करो बाबा। ठीक है लाइट वाइट कहाँ जड़ गया बे। अच्छा यहाँ से जगह है क्या? हाँ है। यहाँ से चढ़ूंगा मैं ऊपर, जाऊंगा आज तो जाऊंगा मैं ऊपर। बेकार है भाई, मैं तो टूट गया। तेरा टूटा हुआ है भाई, तेरा टूटा हुआ है। इधर इधर, अबे अबे गलत 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 जंप, गलत जंप। यहाँ से यहाँ तक जंप करना अच्छा है। हाँ ये सही है, बिना एबिलिटी के ऊपर चढ़ना ठीक है। हो जाएगा। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, ये रहा क्राउन आ गया। क्राउन इससे आगे शायद तुम नहीं जा सकते विदाउट कोई सपोर्ट के, क्योंकि ये चारों ओर से वही है, तुमको एबिलिटी यूज़ करना ही पड़ेगा। या फिर कोई और भी तरीका है ऊपर उठने का, बताओ तो है क्या? मुझे नहीं लगता है। ना मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है एक ट्राई करता हूँ। एक जो है क्या ये वाला जाएगा? ना ना नहीं जाएगा, नहीं नहीं लगेगा यहाँ से, नहीं जाएगा नहीं जाएगा यहाँ से। एक एक तो बनेगा यहाँ पे, हाँ फिर भी नहीं जाएगा ये। Swollen fury. तभी जा सकता हूँ इससे, वरना नहीं होगा। वो क्राउन पे ही लास्ट है, वो नीचे वाला क्राउन पे मैक्स है। यहाँ पे आने के लिए और कोई रास्ता नहीं है ये छोड़ के। चलो एक 10 पुल ठीक है, एक 10 पुल। किसके बैनर पे? इस पे बैनर पे करो, इसके बैनर पे करता हूँ। क्या बोलते हो? बताओ बताओ कौन सा, अंडर एज लड़की या फिर ये वाला गनमैन? एक 10 पुल ही है बस, वो 10 पुल करने वाला हूँ। ऑलरेडी 50 है पिट्टी, तो आएगा नहीं इतना पता है। 50 हो जाएगा पिट्टी तो शायद आएगा नहीं, लेकिन जो भी मिले। बताओ किस में है, कौन सा मैं करूँ? जल्दी टाइप करो जल्दी टाइप करो। ये वाली लड़की ये वाली लड़की, इन दोनों में से। बकचोदी ना करो, मैं वेपन बैनर में नहीं करने वाला ठीक है, पहले से बोल देता हूँ। किस में करूँगा बताओ? आयक का या फिर नविया? अप, दोनों में ही अप लिखा हुआ है। बताओ बताओ जल्दी 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 टाइप करो, कौन सा कैरेक्टर विज बैनर या फिर
विश बैनर 1 या 2 बताओ। ये वाला नया है ना, अभी पे करो। ओके ठीक है, कर रहा हूँ। अरे छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा तो नहीं। और ठीक है, जो भी मिला। एमरल्ड, सबोनियस, और एक अच्छा 4 स्टार कुछ दे दे। क्या मतलब ये? डिबेट क्लब इज ए गुड साइन। नहीं, ये गुड साइन नहीं है। हो गया मेरा, और नहीं आने वाला कुछ भी। हो गया, ख़त्म। 9 नंबर ख़त्म। सबोनियस फॉर्मो, चलो ठीक है, चलेगा। गेम ओवर। बीसी हट। गेम ओवर नहीं, अभी देख मेरा हिस्ट्री में 50 हो गया। चलो ठीक है, अगले बार के लिए कुछ नहीं कर सकता मैं भाई। मैं अगर हारता हूँ इस पे, क्या बोलते हैं, टोटल 50 विश कर दिया, मेरा 18 हो गया। चलो ठीक है फिर। अच्छा, ये कितना दिन तक है? ये रीसेट कब होने वाला है? 2 डेज में। अच्छा ठीक है। गेम ओवर क्यों लिख रहा है? मैं 50 पिटी में तो हूँ, और क्या इसमें से क्या गेम ओवर कुछ भी है? अच्छा वो हो गया, ये हो गया, और एक तो बाकी है ना मेरा डोमेन में। हाँ, और एक तो बाकी है। कौन सा करो बताओ? रेडन को मैं कभी नहीं किया हूँ। रेडन को करता हूँ मैं। रेडन को कभी सोलो नहीं किया हूँ। हर बार मरता हूँ मैं रेडन पे। जब भी करता हूँ मैं मर जाता हूँ। रेडन बहुत टफ लगता है मुझे। ठीक है। रेडन को तो नहीं ले सकता हूँ। ये पूरा टीम को चेंज करना पड़ेगा। ये टीम को लूँ? नहीं, कुकी को नहीं लूँगा। ये टीम अच्छा है, लेकिन डैमेज नहीं दे पाएगा ये टीम। ये टीम ज़्यादा डैमेज नहीं देगा। ये टीम भी वही है। नहीं, मैं पायरो वाला टीम लेता हूँ। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। इसके बदले मैं लेता हूँ और एक हीलर को, जो है ये। Witness my magnificence! इसको लेता हूँ, और इसके बदले मैं लेता हूँ शोंगली को। ठीक है, नहीं बुरा नहीं होगा। एलिमेंटल क्या हो रहा है ये? अफेक्टेड बाय पायरो फॉर 40% लेस टाइम, इंक्रीजेस मैस। अफेक्टेड बाय पायरो फॉर 40% लेस टाइम। अबे नहीं यार, मेरे को चाहिए तो डुएल। मेरे को पायरो लेना पड़ेगा, तो फिर मेरा कुछ अच्छा होगा। इसको हटाता हूँ, फिर मेरे को पायरो चाहिए कुछ। पायरो का किसको लूँ मैं पायरो में? इसका तो शायद मेरा भरा हुआ नहीं। इसका आर्टिफैक्ट वार्टिफैक्ट टूटा फूटा आर्टिफैक्ट है इसका। ले सकता है इसको। और कोई तो है भी नहीं। इसको लेता हूँ, क्या पता लग जाए कभी काम में। दोनों हीलर अटैक बफ एकदम मस्त। चलो देखता हूँ क्या होगा। Venture time! साला आके इतना मारना स्टार्ट कर दिया। बीसी फट से आके मारना स्टार्ट कर दिया ये कुत्ता। Here come the fireworks! Time for a light show! Inferior. अबे 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 भाई 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 भाई। Sweeps the lands. अरे गलत कर दिया। Shattered. I'm going in. Gather. Order guide you. Strike dead. Lightning falls on the land of eternity. Fire hazard. This blood is eternal. Stabilize. Let's light it up. Perish. Everybody
ठीक है। Solidify. Let's light it up. Perish. भाई ये डैमेज इतना कम क्यों दे रहा है? पायरो इफेक्ट का कम हो गया मेरा इसमें। Stabilize. मार उसको, मार उसको, मार उसको, मार। Showing you pain. Solidify. I will have order. I'm going in. The fuse is lit. भाई 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 मर जा, मर जा, मर जा, मर जा, मर जा, मर जा, मर। Lightning, obey me. माय गॉड, कितना मार रहा है बे भोपड़ी के। अरे अरे मर जाऊंगा मैं। Let my name echo in song. Rise. Good to shoot down. Time for a light show. Illusions are but distractions. Gather. Let's light it up. May I present? Thunder. Stabilize. This body is अबे यार, माँ का। teamwork is dreamwork. Adventure time. Let's light it up. Gather. Fuse is lit. Witness the final calamity. I always bounce back. Just watch me. Everybody stand back. Why do they never miss it? Just my... Strike a pose. Eternity is in my hands. Ah. Couldn't break the curse. Oh, brilliant! Time to shine. Only ओ भाई, emptiness awaits. फर्स्ट टाइम इसको अकेला हराया। इससे कभी अकेला हराया भी नहीं था इसको। हाँ ठीक ठाक है। अच्छा हो जाए तो और भी अच्छा। पता नहीं, नहीं आएगा शायद, देखता हूँ। ओके 31 है ना, और 30 में तो कुछ आएगा नहीं। 20 का मैं ये उठा सकता हूँ एक। तरीके किधर गया एंकानोमिया, ये भी तो 40 लगेगा। ये भी मेरा उतना एक्सप्लोर नहीं है। आजम में जाऊंगा तो शायद मिलेगा नहीं उतना, नहीं। समीर में ही चलता हूँ, मिल जाएगा यहाँ से कुछ अगर। छोड़ो, ये रहा सबसे इजी पास में। रिवाइव भी हो जाएगा मेरा बिनी।
अरे Solidify. 너다 혼나나. May I present? ये सबसे अच्छा हील कर रहा है मेरे को 4K करके हील दे रहा है, चलेगा। चलता हूँ स्टोरी के मेन। It's time to pull the trigger. The campaign begins. Behold. There is no escape. Gotcha. Bow your head. Shine down. Torn to oblivion. Illusion shattered. Crumble. The wind rises. Bravo! Good show! You certainly live up to your reputation. Yeah, thank you. Anyway, the path is cleared now, so onwards and upwards. Okay. Vilma, are you there? Huh? Oh, it's you guys. Wait, what's Lady FURINA doing here? I can explain. We've been rounding up the whole troop. We now have everyone except you. So, you think knowing the truth about the director's disappearance will help you write an ending to the script that pleases everyone? I care just as much as everyone else about making the Little Oceanid a success. That's why I wanted to wait until after the show. If I open this can of worms now, I just don't want to make things difficult between us. We're supposed to be a unit when we're on stage. Vilma, avoiding the truth will not help anyone. AFK? क्यों Unless AFK you क्या mean हो to गया? suggest that Aureli's death had something to do with you. I don't want to talk about it. Listen, Vimal. I used to think that my love for Aurelie was a point of shame. विमल I विमल never brought पान it up to मसाला। anyone. But now, I've made up my mind to put it all on the table. I'm prepared to face everything, to sacrifice everything for the sake of the show. The Little Oceanid cannot be complete unless we do justice to Aurelie on an emotional level. This is why people think of you as not being the smart one. As you all know already, the troupe was kept afloat not from ticket sales, but donations from the audience. Of course, that was nowhere near enough.
We took on side jobs when we weren't performing, but even then, the troupe's financial situation was pretty dire. So, anyway, one day after a show, a merchant came to me and offered us a huge sponsorship. In return, we just had to provide the audience with their drinks during performances. It seemed like a win-win, so I said yes to it on the spot without consulting the director. It was only when the merchant came to deliver the goods that I realized the drink in question was synth. Isn't that the drink peddled by the culprit behind the serial disappearances case? उतना ही तो लग रहा है मुझे. I freaked out when I saw the boxes. And I told the director everything right away. She was completely shocked as well. But she didn't reprimand me for making the decision without consulting her. Instead, she contacted the merchant and stated that the troupe could not agree to this collaboration. The merchant was furious, berated us for going back on our word, and threatened to sue us for damages. The amount was astronomical. There was no way we'd be able to pay. And then? I was going to sort it on my own, but the director stopped me. She said that this was an issue for the whole troupe and it wasn't my fault. But things only got worse from there. The synth merchant just wouldn't let up, and then suddenly the director told us all to leave the city one day. I knew then that things must have reached a boiling point. I admit this whole thing was my mistake. I didn't dare to tell any of you the truth back then, and after the director disappeared, I was even more afraid to say anything. Yeah, I got Aurelie killed. There, I said it. Happy now? Hey, don't say that. You traitor! You knew Aurelie was in danger. Why in God's name didn't you tell us? What do you mean, you were afraid? This was a life and death situation. We could have saved her! How could you be so stupid? Please, try not to get too worked up. Yeah, listen to him. You need to stay calm. Stay calm? How can I stay calm? This guy got Aurelie murdered! She was the love of my life! And he has the gall to try and high-road us, claiming that he kept his mouth shut for the sake of the show! How about taking some responsibility for what he's done? All I can say is I'm sorry. Truly. I wanted to apologize to everyone in the troupe, but that won't bring back the director. What good is my apology now? I'm just a coward who made an awful, terrible mistake that I can never take back. Beat me up if you want. Kill me if you prefer. It's what I deserve. End my life. So I can meet the director and apologize to her in person. Get out of my sight! Go! Get lost! I don't ever want to see your face again! That's enough! You've screamed and shouted at each other for long enough. Now pipe down, both of you! Can you stop conflating the show on stage with your real-life relationships in the troupe? You keep saying that you want to use this final performance to pay tribute to your director and celebrate her life. How can you do that if you're just using it as an excuse to vent your own emotions? You're right. I'm sorry. On stage, the lead role is the focal point of the audience's attention. And you're all used to seeing the director as the heart of the troupe. Guys, like कर देना But stream in जो her जो own देख रहे हो. life, her greatest desire like wasn't to be बनता the यार. center of attention. I can tell how much she loved 17 you all, views हो गए, and like how सिर्फ much she 2 loved है. the troupe. Guys, एक बार What like she कर दो. wanted was to build a warm home for all of her brothers and sisters. To shield you all from the storms that rage in the world outside. That's how you should remember her. And that's what you should be celebrating. I understand why you're trying to make her the hero of the story, but isn't she your hero already? After everything she did for you? Yeah.
So think hard about what that means. And then think again about what you hope to achieve by arguing with each other. If you really hate each other and can't reconcile your differences, then you could just call it quits now. Why bother with the final performance if the group is already fractured? But you can't bring yourself to do that, can you? You care too much about Director O'Reilly and the home she built you all to let go. What are you laughing at? I don't see what's so funny. Sorry, I didn't mean it that way. It's just that, for a moment there, it felt like our director was back with us again. If she'd seen Paulo and Vilmont at each other's throats like that, she would have scolded them exactly like you did, in that same stern voice. Really? But she sounded like such a gentle person. Of course she was. Even her harshest lectures came from a place of kindness, and it showed. She really was a truly outstanding person. What you said, it really puts everything into perspective. I'm truly sorry. I really meant for this to be a genuine apology, but I ended up making it all about me and my self-pity. It's all right. Let's save all this for after the performance. So, कहाँ हो ब्रो? हेलो ब्रो, आ गया मैं नात्सू. Clearly, And everyone needs to take a step Yuki, back आ for गया now हगने. and reflect on निकल what गया वो, really निकल गया भाई. तू matters. आ गया, वो निकल When गया. emotions are running high, things get lost in the fray. The end of the story needs to focus back on O'Reilly herself. She's the true star of the show. हो ब्रो हो. मैं बस what do you mean? कुछ और में आ गया The था Traveler सामने. is right. You once investigated that underwater synth base and recovered items belonging to the victims. If you could find anything that O'Reilly left behind, perhaps we can get a better sense of what she went through in her final days. You really think that's possible? I trust that nobody would object to the ending of the story being based on वो तो O'Reilly's पता नहीं true कहाँ चला गया. भाई feelings. लाइक कर देना स्ट्रीम को. आए हो लाइक कर Well, देना. We'll leave this in your capable hands. Come, let's pay a visit to the Palais Mermonia. The rest of you, head back to the rehearsal location for now, and wait for our good news. Play Memorial. अच्छा, मनी हाइस्ट का एक नया सीजन आ रहा है, तुम लोगों को पता है? मनी हाइस्ट का जो बर्लिन है वो आ रहा है. मेरे को एक नेटफ्लिक्स लेना है, सोच रहा हूँ. लेकिन मेरे को उसके साथ साथ और थोड़े लोग चाहिए शेयर करने के लिए. मैं अकेला नहीं लेने वाला, क्योंकि मैं लूँगा एक 4K वाला. तो अगर तुम लोग में से कोई भी लेते हो तो फिर बताना, एक साथ लेंगे. अभी नहीं, लेकिन लाइक लूँगा, बहुत ज़रूरी है. So, this is all O'Reilly left behind. Just whatever she was carrying on her person and this tattered old notebook. Hey! It's full of script lines! And sketches too! Looks like they show where the different props should be placed on stage. Let me take a look. Maybe there's something in here from after she was kidnapped. हार्ड वे Aha! ब्रो, I मुझे found नात्सु something. के काम पता चल To गया. वो whoever खेलता है discovers this diary, 5-7 बजे Let's see. रोज जीएफ के looks घर like she जाता है, kept a लेकिन detailed record of her captor's वो actions. रेलवे स्टेशन She पर even जाके mentions the कटोरा truth behind लेके the और experiments अपना on मुंह dissolving खोलकर young हॉर्स women. If we'd had the उसका chance to स्लोगन examine जिसको this देना है notebook दे दो. carefully back then, मैं it would have been a पब्लिक conclusive piece of कॉमन evidence हूँ. proving Vachey's guilt. Lachey took so many lives. It's still so unthinkable how many victims he had. I guess O'Reilly must have written all of this down in the hope that her records would one day be of use to investigators. Wait, it cuts off. Her handwriting here gets patchier and more illegible by the line. She probably didn't have much strength left. Her final words are... I'll let you read them for yourself.
Oh, so the next 6 of us. Serious cautious inventions. Bro, आते के साथ ही करते था like. अच्छा, thank you. Actually, sorry, I write no more. Musicals लिख गया था. She was so terrified. She may have been a mighty hero in the eyes of her troop, but at the end of the day, she was only human. I can't bear to think how painful and lonely her final days must have been. Wait. This part on the last page sounds strangely familiar. नाचो के काम ठीक से लग नहीं If रहा है you मुझे. become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this truly what you want? Isn't that the most important line in the Little Oceanid? Because I am an older sister to them. Oh. So she didn't regret her decision. Even as she sat in silence, waiting for death to come. I'm sure this is what the troop would have hoped to hear as well. She had their utmost trust, admiration, and love. And she truly deserved it. Let's go. It's time for them to learn Director O'Reilly's final thoughts. नाचो के और आज स्ट्रीम पर बोला कि सस्ते नशे में मज़ा नहीं आता है. कौन से भाई साहब नाचो अपना गड्ढा क्यों खोद रहा है. ये सब बोले की क्या जरूरत है भाई. बताओ सस्ते नशे की आदत है क्या करे. देखो अभी उसका बहुत बहुत बड़ा वो फेज से निकला है अपना. ठीक है ना, ऐसे ना बोलो उसको. आज पता नहीं क्यों बस बंदे जब कम होता है ना और स्टोरी बोरिंग होता है, मज़ा नहीं आता तो स्ट्रीम करने में. सच बताएं, अगले बार सोच रहा हूँ कि एकदम डायरेक्ट कर दूंगा स्ट्रीम, मतलब ख़त्म कर दूंगा इसको. उसके बाद जो होगा होगा. और स्ट्रीम नहीं करूँगा, उसके बाद वीडियोस अपलोड करूँगा. She सबसे deserves a बेस्ट hero's farewell. If that's the only way to convey to the audience the courage and selflessness that she showed in the face of death, then it's a meaningful way to end the story. Even in the last moments of her life, she was still leaving a trail for others to follow. She did her best to protect as many people as possible, even if it meant sacrificing herself. We know what choice our little Oceanid would have made now. I don't think any more discussion is necessary. Well, Vilmont, if we put the past aside for now, do you think you can bring yourself to go ahead with the show? I will channel all my regret and put it into my performance to make this a show worthy of our director. I won't ask for your forgiveness, and you don't need to worry about my feelings. This final farewell show should be about Director O'Reilly and her alone. Then it seems like we've reached a consensus. I have a feeling that this will turn out to be the most mesmerizing performance of your lives. Really? How can you be so sure when you've never even seen them perform before? Don't underestimate my experience. After watching a countless number of musicals, I've learned one important thing. मस्त गेम खेलो ब्रो. जेंशिन इम्पैक्ट ज़्यादा फेमस नहीं है. गेम खेलो लाइक डेड बाय डेलाइट, ग्रैनी 4 या अब कुछ दिनों में इंडस बैटल रॉयल आएगा, उसको खेलेगा. Assassin's Creed कैसा लगता है तुम लोग को? Assassin's Creed का एक नया आने वाला है जो इंडियन थीम पे बना हुआ है, मिराज. बताओ वो कैसा लगेगा तुम लोगों को अगर तुम मतलब. लेकिन उसको खरीदना पड़ेगा, एक 1700 के आसपास है उसका प्राइस.
And thank मैं you अभी for खर्चा नहीं supporting us करना through चाहता all उस पर, this. क्योंकि मेरे सामने भाई Then का let's शादी है। not delay things any और longer. शादी में थोड़ा We need खर्चा to वर्चा discuss तो the होगा। details of the ending and get it nailed down once and for all. Actually, before that, I'd like to make a proposal. During the curtain call, please allow me to use the director's name instead of my own. Huh? वो मस्त But है। then... After all, this role was originally meant to be played by the director. I'm just filling in for her. Besides, a role commemorating her life should be associated with her name. Well, if you're sure you're okay with that, I have no objection to it. Now we're talking like a serious acting troupe. All right. I'll कर leave लो you to fine-tune नात्सु your musical while I go बेक and देना, procure a stage. नात्सु के बेक देना, Procure a उसको stage? रोज का काम है मर। Oh, it's okay. Our usual place doesn't need a reservation. That place? Oh, don't be silly. For an extraordinary show, we need an extraordinary stage. By which I, of course, mean the Opera Epiclese. Whoa, wait, what? No. That's never going to work. It's far too fancy for the likes of us. What are you afraid of? Surely you don't think that Aurelie's story is unworthy of the grandest stage in Fontaine. No, though that's not what I meant. It is supposed to be your grand finale, right? I have no problem with it then. How about the rest of you? Yes, nod your head. Okay, ठीक है, हम लोग I'll करेंगे। take your silence as a yes. Thank you for giving us this opportunity. It really is a dream come true. Well, then don't disappoint me. If you mess this up, it'll reflect poorly on me too. Come on. We'll need to get the go-ahead from Nerilette. I know just where to find him. बीजीएमआई तो भाई मेरे को खेलना नहीं आता, मैं उसमें वो मैं कैसे खेलूं? बीजीएमआई सही में बताओ, मेरे को उतना प्रो नहीं हूँ मैं। फ़ोन में खेल सकता हूँ लेकिन फ़ोन में मैं स्ट्रीम नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत खेल भी लूँगा लेकिन स्ट्रीम नहीं होगा, वो गर्मी बहुत गर्म हो जाता है मेरा फ़ोन, उसका एक The wind प्रॉब्लम है। rises. Hey, look at that. Looks like I guessed right. You were just guessing? I knew you'd be here. I'm here merely for a short break. It has been a while, Miss FURINA. And you too, traveler in Paimon. What might I assist you with today? I would like to book the Opera Epiclese for an event. You see, Share the story. I understand. The process for booking the Opera Epiclese is complex and can be somewhat cumbersome. But given that the request is coming from the three of you, I see no reason to make things unduly difficult. The story of the little Oceanid is most fascinating. I'm looking forward to seeing it performed on stage. I will say, however, that I am surprised to see your passion for the performing arts rekindled after all that has happened. what do you mean? Do I look excited? Yes. And this is the first time that I've seen you like this since your departure from deityhood. At first, I just felt bad about rejecting them. So I wanted to learn a little bit more about their situation. But one thing led to another, and... well, here we are. In the past, ये we एज तो sat इसका in our करीब high chairs in the court, कितना giving our 500 है, opinions on 500 या isolated 600 के cases, 800 के आसपास all है। while knowing very little about the human बहुत old stories है ये। behind each and every one. Maybe it's because I finally become an ordinary person and gained my freedom. But I've developed a great sense of curiosity about their lives. I am truly delighted to see you find a new lease on life. Now that you've regained some confidence, have you had any thoughts regarding a return to the stage? Why would you suddenly ask a question like that? Well, if the Little Oceanid turns out to be a great success, it will no doubt become a classic. Many theater companies are certain to add it to their repertoire. The experiences and decisions of the protagonist Cleo are all modeled after your own. Naturally, this makes you eminently suited to playing the leading role. It would truly be a shame if you did not take this opportunity to allow audiences to enjoy your outstanding acting talents once more. Haven't I
already made myself clear. I won't act or perform in any role ever again. No exceptions. Nor do I think it is any great shame. There is no lack of fine actors or inspirational stories, either on or off the stage. This experience is a case in point. I feel like I've learned a lot, and it has already been well worth the price of admission. I must admit, though, I'm a little envious. They're quite fortunate to be able to bid farewell to their past in such a magnificent manner. I see. Well, I'm glad to learn that you have found a role to play that you enjoy. zero का difference आ गया वही. I sincerely hope the show will serve as the grandest of finales. I will have my staff book the date and mail the relevant paperwork to the troupe once the details are confirmed. Thanks, Nervalet. You are very welcome. खत्म. Squall and Fury. इसका बीसी पामन को देख लो, साला 24 घंटा पता रहता है. हाँ भाई, पामन का थोड़ा इरिटेटिंग मेरे को लगा था. वो लूमी का जो ये है ना, वो वाला अगर लोग देते ना अच्छा लगता बहुत. लूमी को अपना एक अगर दे देते वॉइस लाइन, उनका वॉइस लाइन, उसका वॉइस लाइन कुछ भी नहीं है. ऐसे करके स्पाइडरमैन का ट्रैवलर कुछ बोलता ही नहीं. हाँ, वो बस एक ही 2 बार बोला है. एक तो ये लास्ट वाला ब्लेम करते वक्त, पिछले लास्ट टाइम था वो नाहिदा का, वो जब उसके ड्रीम से वेक करते हो तभी सुना था मैंने. उसका पहले तो सुना ही नहीं था. Monsieur Nervalet was moved to provide us with a fitting stage for this special performance. We've had to fight every step of the way for this opportunity. But we now have all of the ingredients necessary to stage मेरे को a पहले नहीं truly लग रहा था spectacular जब वो performance. निकला था. फिर लगा कि यार क्या यार उड़ता चीज़ है, उसको क्या करूँ. फिर देखता है भाई उसके उड़ने के वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है. एक्सप्लोरेशन में हेल्प होता है बहुत ज़्यादा. वो सायु यलान गॉड हो जाता है पूरा एक्सप्लोरेशन का. The sooner we can finalize the ending, the more time we'll have to rehearse. Fiamon and I just went over some parts of the script and tweaked a few things. I think it's really going to resonate with the audience now. Wow, you two had a constructive conversation? That's great! Communication is vital to any good performance. Look at us. We've come so far. I never could have pictured this scene a few days ago. नावियों को पढ़ते हैं नहीं, वही तो जब लास्ट टाइम इसको जो ब्लेम किया था उसी वक्त बोला था. और पता नहीं नाविया का स्टोरी तो मैंने किया नहीं हो, वहाँ पे अगर होगा तो अलग है. और वो था नाहिदा के ड्रीम में जाके उसको वेक करते वक्त उसको किया था. Time to practice the opening number. Cursed Cleo. She stole the waters of life from us. She's a fraud, and she must pay for her crimes. This has nothing to do with her. The ignorance and hatred of our people is to blame. How can we hope to win back the water's favor if we don't change our ways? This guy could be useful. Take him hostage. If Cleo wants him back, she'll have to show herself. Leave this place, oh little Oceanid, and never, ever look back! Everyone's really throwing themselves into their roles. I haven't seen such a fine performance in a long time. If only... What should we do? It's almost time for her to take the stage! Why does it have to be now? Hey, what's going on? You're due on stage any second now. Oh no, not again. But why? What about your new meds? Did they stop working? They've been
been getting less and less effective over time. I've had to keep increasing my dose. What? I thought they cure it. So they were only managing your symptoms? I figured whatever it took to get me through this final performance. How could you do this to yourself? And after that lecture you gave me about not looking after my health. I'm sorry. I've let everyone down. You... This is a conversation for another time. How can the show go on without its star performer? Miss FURINA, I'd like to make a request of you. Say no more. If you're sick, you need to rest. I know what you're going to ask. Loic, your character has no more scenes, correct? Oh, yeah. I think my scenes are all done. Although, I do have one more line. But I guess another guy in the troupe with a similar voice register could take it. Why? Please take Delphi back to her place to rest. I'll sing the finale. From the sublime to the ridiculous. After all that, everything's come full circle. Thank you, Miss FURINA. I'm so sorry to put you in this position after everything you said. Never mind. What's done is done. It's really my own fault for getting in too deep. No one likes regrets, myself included. Leave it to me. I've watched you rehearse so many times that I've learned Cleo's part by heart. I do not doubt your acting skills, but please allow me to ask just one more question. After all, this show is dedicated to the life and legacy of our director. What, in your opinion, is the reason Cleo shines so brightly? It's her pure heart. Despite all the pain and loneliness she had to endure, she never once stopped believing in the beauty in this world. Well said. I leave Director O'Reilly in your hands. Is she here yet? Will she get here? She's not coming! You're wrong. She's here. Si je pouvais vivre dans l'eau, le monde serait-il plus beau? Me pardonneras-tu, ô chère mère? L'eau dans son courant fait danser nos vies, et la cité elle nourrit, ainsi que toi, mon doux amour. But what about your wish? My wish. If you become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this truly what you want? Le grand amour ne suffit pas, seul un adieu fleurira. C'est notre histoire de vie, douce et amère. Moi, je serai toujours là, à voir le monde et sa beauté.
Is it just me? Or was that Lady Furina on the stage just now? She hasn't been seen for a while now, and she just appears out of nowhere? Gotta say, though, her acting skills are as superb as ever. The little Oceanid, Cleo, played by Aurélie Fumont. Wait, that's not her name. What's going on? I don't know. Maybe it's just a doppelganger. I've spent a lot of time out of the spotlight, and they didn't use my name during the curtain call either. Hopefully, not too many people recognized me. It's too bad that I had to break the one clear rule I'd managed to make for myself, even if I had no choice. Still, I have to admit that, despite everything, it felt good to be back on the stage again. Finally, we would like to give a special thanks to our artistic consultant and event coordinator, Miss FURINA. Hey, that's not what we agreed on! Oh, so it was Furina after all. She's back! Honestly, what is he doing? He should have run that by me first. All right, calm down, don't be mad. This was a group decision. We just didn't want your contributions to go unacknowledged. After all, it's been the rule in Fontaine since ancient times that everyone's work, visible or invisible, is equally deserving of recognition. Yes, I know the rule, but it should still be applied on a case-by-case basis. I wasn't ready for this yet. It's no big deal. What's the worst that could happen? Oh, yeah? Well, since you think it's so easy, you can sign them for me. This is a great chat and all, but can we talk about that crazy thing that happened during the show? It nearly gave Paimon a heart attack. Paimon flew over to where she was supposed to be and was about to drop the prop vision, and then suddenly, a real one popped out of thin air! Oh, that. I've got no idea what happened there either. But hey, it worked pretty well, didn't it? I'll bet the audience has never seen such a realistic prop. Wait, what about Dolphy? I wonder how she's doing. Oh, let's go check on her as soon as we finish clearing the stage. Yes. Plus, she'll definitely want to hear how the end of the show went. If nothing else, we can safely say that we accomplished what we set out to do. Quit following me. Ah, you're back. She's doing okay. Her condition stabilized after taking some of her original medication. From experience, though, I'd say she still needs a few more days of rest. How did the performance go? Was it a success? Did the audience like it? You'll be glad to know it was fantastic! Also, you're not gonna believe what happened while Furina was on the stage. You'll probably be able to read all about it in the Steambird first thing tomorrow morning. That's wonderful. I'm so sorry I failed to see it through to the end.
I guess I was wrong to try and tough it out to begin with. Don't worry about it. Like they told me after announcing my name during the curtain call, everyone's work deserves recognition. Even though you couldn't see it through to the final scene, the audience was very impressed by your performance. It's safe to say that you made your mark on this memorial show. Well, one way or another, we did it. I've had bad luck ever since I was born, so I never expect things to go smoothly in life. I'm just happy to know that we went out on a high note. That's all that matters. Blaming your bad luck again, are we? Maybe if you didn't push yourself past your limits so much, your illness wouldn't be flaring up all the time. Oh, don't you start. I don't have the energy to argue with you right now. Aw, you two clearly care a lot about each other. I don't know what you're talking about. You mean we never stop arguing with each other? So, any plans for the next step? After the brilliant performance you put on, the reputation of your troupe is sure to spread through Fontaine like wildfire. You won't have to disband if you don't want to. You could capitalize on the rave reviews and license out the Little Oceanid to the bigger theater troupes out there. That would do wonders for your financial situation. No, we should still disband. Yeah, it's what we all agreed to. After all that's happened, I should give you guys some space. But maybe our paths will cross again one day. Hey, don't just walk off! I still want to keep performing, so I might join another troupe. After watching Miss Furina's performance, I think I'm starting to understand our director's infatuation with musicals. You should do it. It suits you. I'd originally hoped to keep performing too, but I don't know if my health will allow me to. Oh, so now you finally got your priorities in order. I guess I'll hold off until you've properly recovered as well. What about you, Miss Furina? Any future plans? Well, frankly, I think a return to obscurity is no longer an option for me. I'm sure a slew of consultancy requests will hound me wherever I go, until I finally acquiesce. You rather sealed my fate there with your special thanks at the end of the show. Sorry. It's quite all right. No need to apologize. What I meant to say is that this whole experience has shown me that perhaps I'm not as averse to a return to the stage as I'd previously imagined. Maybe Nervilette was right. Maybe Cleo is the right role for me. I still don't wish to pretend to be someone else, but I do have a desire to express myself. So, maybe the show will go on for me after all. Yeah. There was once a time when I was an actress in a masquerade, seeking only to hide the truth. But from now on, I want to spend my time learning real stories about real people and how they touch the lives of others around them. I want to watch them blossom and wither, see them refined on the page, retold on the stage, and remembered long into the future. I'm sure this is what captivated director O'Reilly as well. Sounds like you're ready to stop running from your true calling. The more you get out into the world, the more you'll discover what a fascinating place it is.
Then it's a deal. If a vision is a gift from the gods, then I should do my best to honor it. खत्म. लॉक मत कर देना भाई, बस यही है. खत्म हो गया. फुरिना स्टोरी कंप्लीट. मेरा भी ये कंप्लीट हो गया. चलो आज के लिए इतना ही बस. द लिटिल ओसिनेट खत्म. टाटा बाय बाय. उसके बाद से छोटे छोटे जो स्टोरीज है वहाँ हैंगआउट्स में कंप्लीट करूँगा, लेकिन हैंगआउट्स में बहुत टाइम जाएगा. 17 और कुछ है. हाँ, नाचो से लूँगा मैं मजे में. अरे नहीं ले. जो करना है करो भाई, मैं नहीं जानता. तुम लोग जो करो भाई. एक काम करना देव, थोड़ा अपने दोस्त लोगों को शेयर करके थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइयो. टोटल एटलीस्ट लाइक 200 कर. 200 तक तो 10 सब्सक्राइबर ला. मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं और कहाँ से जाके मतलब कैसे करके करूँ, इसीलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ और कुछ नहीं. अगर हो सकता. If you ever have... चलो ठीक है. मैं अभी और कर देना, बाद में मैं कर लूँगा, क्योंकि अभी तो ये बंद कर देने वाला हूँ मैं. हो गया आज का. अगली बार जब जाऊँगा, जब आऊँगा कल ऑनलाइन, तब करियो ये, ठीक है. शेयर वेयर कर देना अगर हो सके तो. कोई इसमें अकाउंट में जो क्या बोलते हैं, लाइक डिस्कॉर्ड के वो चैनल्स में जहाँ पे तू है, शायद मैं नहीं हूँगा. अगर वहाँ पे पब्लिक ऐसा है कि शेयर कर सकते हो तो वहाँ पे कर देना, ठीक है. चलो मैं चलता हूँ. मेरा ख़त्म हो गया टाटा बाय बाय वाला सीन हो गया. ये खा के अभी खा पी कुछ तो पी. कुछ नहीं पी रही है. कुछ नहीं पी रही है. सही है. चलो टाटा बाय बाय. सी या बडी. इसका वो ये घूमने लग जाए बस. इसका घूमने लग जाए वो चीज़ बस. बस तू घुमा दे एक बार भाई. बस तू एक बार घुमा दे. Daddy Youngly. अबे इसी तेरी माँ. Youngly बेबी घुमा दो वो. घुमा दो रॉक्स तुम्हारे चारों ओर से. एकदम टी करके एकदम सिनेमैटिक एंट्री होगा इसका. घूमने लगा. ये क्या ग्लिच है? ये फूल ऊपर नीचे होते रहते हैं क्या? ये कैसा ग्लिच है? Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle.